Wait a minute. Good evening, students. Am I audible? आवाज आ रही है राजेश? Audio video is okay. Let's start the class. In yesterday class, we were discussing that crops and classification. Crop and classification. In yesterday class, we discussed that on the basis of different purposes, uses, season, there are different classification. But on the basis of uses, on the basis of we differentiate crops in many ways, like cereal. First one is cereal. Second one is legumes. Third one is fodder. Fourth one is fiber. Next is commercial. आगे क्या था? कमर्शियल के बाद ग्रीन मैन्योर. पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कल वाला, फिर जो है आगे चलेंगे. यहां तक क्लियर? So in our last class we discussed that cereal are divided into two categories. One is major cereal, जिसमें एग्जांपल हमने क्या पढ़ी थी? जिसमें एग्जांपल थी राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, मक्का, जौ, गेहूं और चावल, धान. उसके बाद हमने पढ़ा था मिलेट्स. मिलेट्स जो हैं आगे दो तरह से क्लासिफाई किए हुए हैं, एक है मेजर, एक है माइनर. मेजर में हमने क्या पढ़ा था? सोरगम हो गया, पर्ल मिलेट हो गया. माइनर में हमने क्या पढ़ा? सिंगल मिलेट हो गया, रागी हो गया. ये सारे क्या है? एलुसिन, पोरागाना हो गया. ये क्या है? माइनर मिलेट्स में. फिर हमने पढ़ा था लेग्यूम्स. लेग्यूम्स के आगे हमने तीन टाइप पढ़ी थी. सबसे पहली लेग्यूम कौन सी थी जो हमने पढ़ी? एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, ग्राम. सेकंड वन इज बीन्स. थर्ड वन इज पी. ग्राम में हमने क्या पढ़ा? रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, चिकपी, मूंग, बिजना मूंगो यानी कि मूंग की दाल जिसको हम बोलते हैं, अरहर हो गया. ये सारे क्या है? ये ग्राम में आते हैं. बीन्स में हमने क्या पढ़ा था? फ्रेंच बीन. जो भी बीन्स वाली क्रॉप है वो लेग्यूमिनस जो है उसमें आ जाएंगी. और पीज में हमने पढ़ा था पी, मटर, वो हमने पढ़े थे. उसके बाद हमने फोडर पढ़ा था. फोडर को हमने दो ही क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, एक थी एनुअल, एक थी बाइनियर. ये हमने पढ़ी थी. अंडरस्टैंड? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं कल की क्लास में क्या किया था. नेक्स्ट फाइबर. फाइबर की हमने तीन टाइप पढ़ी. कौन कौन सी? फ्रूट फाइबर, स्टेम फाइबर और लीफ फाइबर. फ्रूट फाइबर में हमने क्या पढ़ा था? कॉटन. स्टेम में हमने क्या पढ़ा था? जूट, नेस्टा. लीफ में, इन लीफ एग्जांपल्स आर सीसल एंड पाइनएप्पल. I am writing down only the important one. There are so many examples, but I am writing down the only important one for your exam point of view. Clear? Next one is commercial. Commercial में sugar cane. Commercial crop क्या थी? जिसमें 75%, more than 75% of our produce used for trading purposes, not for subsistence purposes, but used for or grow for the trading purposes. So commercial crops are like sugarcane, which require processing before the consumption of our human. हमारे खाने से पहले या उसको यूज करने से पहले उसकी कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ती है. उस क्रॉप को हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल. लाइक शुगरकेन, पोटैटो, कॉटन, जूट, टबैको. These all are example of commercial crop and most important. नेक्स्ट ग्रीन मैन्योरिंग में हमने दो टाइप पढ़ी. कौन कौन सी? इन सिटू एंड एक्स सिटू. एंड एक्स सिटू. इन सिटू एंड
एक्सिड। क्लियर? ये है कल का लेखा जोखा जो हमने कल की क्लास में किया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है? On the basis of the botanical or taxonomical classification. First one is classification on the base of use. For example, we classify the crops on the basis of uses like cereals, pulses, oilseed. Remember, oilseed are two types, edible and non-edible. Fodder, next one commercial, fiber. These all are the classification of crops according to their uses. कैसे हम उसको यूज कर रहे हैं. Next one is classification of crops according to botanical or taxonomical classification. See, in your family, आपके घर में जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, सभी सिमिलर नहीं हो, सभी जो हो एक जैसे नहीं हो, सिमिलर नहीं हो. ठीक है? आपके जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, वो भी अलग अलग हो, है ना? किसी का हाइट में फर्क है, किसी का आंख में फर्क है, तो ऐसे बट हैं तो एक ही फैमिली के. So we classify the crops according to the family of the crop. Is a different classification. Different classification that botanically हम crop को कैसे classify करते हैं, कैसे हम बांट सकते हैं on botanical basis. First one is poaceae. First one is poaceae and the most important one, इसमें all the cereals, millets and grasses are included in the family Poaceae. But those cereals who is having starchy grain, but not considered in the family Poaceae, is known as pseudo cereal. Clear? So in Poaceae, cereal, millets and grasses. For example, wheat, you can write down wheat, rice, maize, sugarcane, oat, barley, oats, barley, rye. Clear? So these are the for all the millets like finger millets, bajra. So these all are cereal or millets. Clear? As we discussed earlier. Next one is Taplionaceae. Taplionaceae or legumes. All the legumes crops that we discussed in our yesterday lecture, that all the legumes crops, legume crops are divided into two major parts. First one is two major part. Three major part. First one is gram. Second one is pea. Third one is beans. So all the parts, all the crops are included in this Taplionaceae or legumes or Leguminaceae family. Leguminaceae family. But some other crops are also included in Leguminaceae crop, like groundnut. Groundnut is a legume crop having family. देखो, ग्राउंडनट को हमने वहां पर पढ़ा ऑयल सीड के अंदर, बट फैमिली के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ये लेग्यूम के साथ ही लिखा जाएगा. ठीक है? सोयाबीन को भी हमने वहां पर पढ़ा था ऑयल सीड के अंदर, बट इसको हम क्या है इसके अंदर लिखेंगे. ग्रीन मैन्योरिंग इज अ डिफरेंट क्लासिफिकेशन इन आवर यस्टरडे क्लास, बट mostly all the green manuring crops are belong to Leguminaceae family. All the green manuring crops belong to Leguminaceae family. So these all are the Leguminaceae और Taplionaceae. सेम चीज है, कोई डिफरेंट नहीं है. तो कौन कौन आ गया इसमें? पल्सिस, लेग्यूम फोडर, वेजिटेबल्स, ग्राउंडनट, परसीम. परसीम को कल हमने फोडर में पढ़ा था. तो ये सब जो हैं ये लेग्यूम क्रॉप्स के अंदर आते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन इज क्रूसीफेरी. क्रूसीफेरी में क्या आ गया? मस्टर्ड, रेपसीड, ये सारे क्या हैं? ये ऑयल सीड क्रॉप हैं. रेडिश, कैबेज, कॉलीफ्लावर.
मूली, है ना, हमारी जो है गोभी, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब क्या, सब कुछ क्या है, ये है हमारे क्रूसीफेरी। ये क्या है, क्रूसीफेरी। नेक्स्ट वन इज कुकुरबिटेसी। नेक्स्ट वन इज कुकुरबिटेसी। जो भी हमारे घिया, कद्दू, तोरी, लौकी जो भी आ जाते हैं, मतलब ऑल द गोड्स, बिटर गोड, bottle gourd, pumpkin, cucumber, all the gourds are included in the family of cucurbitaceae. So remember, all the gourds like bitter gourd, pumpkin, bottle gourd are included in the family cucurbitaceae. Clear? And malvaceae, most important, malvaceae, cotton, ladyfinger और rosette. In some books, जूट को भी कई बार लिखा जाता है फैमिली मालवेसी, बट इसकी पहले जो फैमिली थी, बिफोर दैट इट्स फैमिली इज मालवेसी, बट नाउ जूट की जो फैमिली है वो क्या है, टिलिएसी। रिमेंबर द पॉइंट, अभी क्या है, टिलिएसी। नेक्स्ट सोलोनेसी, वो मोस्ट इंपोर्टेंट वन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। सोलोनेसी में पोटैटो, टोमेटो, टोबैको, चिल्ली, ब्रिंजल, मतलब ये सभी आपस में क्या है, ये भाई बहन है भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो सीरियस में, मतलब व्हीट और राइस के जो पत्ते आप देखोगे लगभग लगभग सेम देखोगे। इनके जो पत्ते होंगे, लीव्स ऑफ मालवेसी फैमिली क्रॉप्स, द क्रॉप्स व्हिच बिलोंग टू मालवेसी फैमिली हैविंग द मोस्टली सिमिलर पैटर्न ऑफ द लीव्स। तो एक परिवार से तो है ही, हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस है पर एक परिवार से है। सो लीव्स ऑफ कॉटन एंड लेडी फिंगर, ओकरा, भिंडी, having similar pattern of leaves. Next, Solanaceae, potato, tomato, tobacco, chili, brinjal, Tiliaceae, jute, Astraceae, composite. Astraceae family is also known as composite, which include sunflower, safflower और niger seed. ये सब कुछ क्या है, ये oil seed crop है। क्लियर? फिर है Chenopodiaceae. Chenopodiaceae में क्या गया, स्पिनच, शुगर बीट और Chenopodium। क्या गया, Chenopodium. Next one is Pedalaceae. Pedalaceae. I can provide you more than 10 question paper, not from only NABARD, but exam point of view, your all agriculture exam, where this question is asked, what is the family of sesame, or which crop belong to the family of Pedalaceae? That is sesame, till. हिंदी में कहते हैं तिल, तिल नहीं, तिल। क्लियर? नेक्स्ट वन इज U4BSC, also important one, U4BSC, castor, tapioca, all these are included in family U4BSC. U4BSC. Next one is convoluaceae. Just wait a minute. Next one is U4BSC, castor and tapioca. Next one is convoluaceae, sweet potato. Important one. Remember the one thing. अगर किसी एक फैमिली में स्पेशल एक क्रॉप आ रही है, if only one or two crops are included in one family, it is important one for your NABARD point of view. I can tell you 2 to 4 questions that asked in your NABARD exam related to your family. What is the family of this crop, or which crop is included in this family? Clear? Next one is amlefari, coriander, धनिया, cumin, जीरा, carrot और anise. Next one is liliaceae. Liliaceae में important one कौन से, onion, garlic, onion and garlic. Liliaceae भी क्या देते हैं इसको, Liliaceae भी क्या देते हैं. नेक्स्ट वन इज जिंजीब्रेसी, जिंजर, जिंजी नाम से पता चल रहा है, जिंजर और टर्मरिक, ये देखा होगा, जिंजर और टर्मरिक, है ना, टर्मरिक भी जिंजर की तरह लगती है, तो दोनों सेम तरह के हैं, और इसकी फैमिली क्या है, जिंजीब्रेसी. जिंजीब्रेसी, दैट्स ऑल अबाउट द botanical classification of crop, how we classify based on the botany or the family. We can classify these crop according to botany in other way also, like
it is a monocotyledon or it is a dicotyledon? Is it a monocotyledon family or a dicotyledon? What is monocotyledon and dicotyledon? Firstly, you write this, then I'll tell you. We can classify based on the botanical aspects that monocotyledon or dicotyledon. In monocotyledon, there is only one cotyledon. Only one cotyledon. If you break down the seed, actual में cotyledon क्या है? Seed leaf. Seed leaf को हम क्या बोल देते हैं? Monocotyledon. Seed leaf को क्या बोलते हैं? Monocotyledon. The crops belong to monocotyledon. The crops having monocotyledon, that is only one cotyledon, having parallel venation. Having parallel venation. उसके ऊपर वेन्स है ना, वो पैरेलल होंगी ऐसे करके, उसके ऊपर वेन्स हैं वो पैरेलल होंगी. बट इन डायकोटिलीडन, there is a two cotyledon in seed leaf and crops belong to dicotyledon having native venation, not parallel venation. पैरेलल वेनेशन नहीं होगी, वहां पर वेन्स जो होंगी, जो धारियां होंगी जो पत्ती के ऊपर, वो अलग अलग होंगी, जैसे कि कॉटन में देखने को मिलता है. कॉटन का जो पत्ता होता है बहुत ही ब्रॉड होता है, ये बहुत ही ब्रॉड होता है और उस पर वेनेशन जो है कुछ इस तरह से होती है, लाइक अ नेट. क्लियर? द क्रॉप्स बिलोंग टू monocotyledon family having fibrous root. Fibrous root meaning fiber, thread like, बिल्कुल पतली, बिल्कुल छोटी और डेप्थ जिसकी बहुत ज्यादा लो होगी, कम होगी, बहुत ही लो डेप्थ पे करेंगे. लाइक ऑल द सीरियल क्रॉप्स, मिलेट्स belong to family monocotyledon. But in dicotyledon, the root system is taproot. Mostly taproot. In taproot, the depth of the root is high. बहुत ज्यादा जो है डीप जाएंगी, अपनी पानी को, न्यूट्रिएंट को ढूंढे, और सपोर्ट जो है बहुत अच्छी रहेगी. जितनी ज्यादा डेप्थ कम जाएगी उतनी जो है प्लांट को सपोर्ट नहीं मिलती. जितनी ज्यादा जो डेप्थ पे जाएंगी उतनी प्लांट को जो है सपोर्ट मिलेगी. तो दैट्स ऑल अबाउट मोनोकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन. द क्रॉप बिलोंग टू मोनोकोटिलीडन इज सीरियल्स लाइक पैडी, व्हीट, सोरगम, पर्ल मिलेट, मेज. क्लियर? हैविंग ओनली वन सीड लीफ. सीड लीफ को क्या बोलते हैं हम? कोटिलीडन. इन ईच ऑफ इट्स सीड सच प्लांट हैव अ शैलो रूट्स, नैरो, शैलो रूट्स यानी कि फाइब्रस रूट, नैरो लीव्स पतले पत्ते छोटे से, एंड टिलरिंग एबिलिटी जो है होगी, उसमें क्या है? टिलर्स होंगे. व्हाट इज टिलर्स? देखो, व्हाट आर टिलर्स? दीस आर रूट्स. टिलर इज बेसिकली इज दैट लीफ originated from the basal portion of the crop which produce the flower or produce the our main product in the crop. जिससे जो है हमारी मेन क्रॉप जहां पर लगते हैं, फूल फल जो है जहां पर लगते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? टिलर्स, जो बिल्कुल नीचे बेस से आएगी. तो मोनोकोटिलीडन, द क्रॉप्स बिलोंग टू मोनोकोटिलीडन फैमिली हैविंग टिलर एबिलिटी, बट इन डाइकोटिलीडन टिलर एबिलिटी देखने को नहीं मिलती, हैबिट देखने को नहीं मिलती. तो ऑल द सीरियल्स, मिलेट्स, क्रॉप्स आर इंक्लूडेड इन मोनोकोटिलीडन. बट इन डाइकोटिलीडन, Malvaceae family like cotton, okra, crucifery, cabbage or mustard, Solanaceae, tobacco, potato, brinjal, Leguminaceae, groundnut, pigeon pea, gram, all crops having dicotyledon, means having two cotyledon in
In each of its seed, such plant have deep tap root system, broad leaf, पत्ते चौड़े होंगे, and branching ability. डायकोटिलीडन में टिलरिंग एबिलिटी नहीं देखने को मिलती, इसमें ब्रांचिंग एबिलिटी देखने को मिलती है। ब्रांचिंग एबिलिटी क्या होता है? देखो, टिलरिंग क्या था? जब यहां से रूट्स निकलती हैं, यहां पता है क्या? The leaves originated from the basal portion of the plant and produce our main fruit or flower. It is known as tiller. But in branching habit, पहले ये ब्रांच है, फिर ये ब्रांच। ये ब्रांचेस जो हैं ये बढ़ती जाएंगी, यहां से ब्रांच निकली, यहां से निकली, यहां से निकलेगी, यहां से निकली, यहां से नहीं होगी, यहां से ब्रांचेस अलग अलग निकलेंगी इन डायकोटिलीडन, इन डायकोटिलीडन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, on the basis of origin, in yesterday class we discussed the crop classification based on uses. Next one is crop classification based on the botany according to their families and according to their cotyledons. Next one is on the basis of the origin, classification based on the basis of the origin. First one is native and second one is exotic or introduced. पहले है नेटिव, नेटिव मतलब उसी देश के वासी, है ना, नेशन, नेटिव। अगर उसी देश के नेटिव हैं हम, या क्रॉप हमारी उसी देश में है, तो इट इज अ नेटिव क्रॉप। बट इफ वी इंट्रोड्यूस सम क्रॉप फ्रॉम अदर कंट्रीज और फ्रॉम अदर कॉन्टिनेंटल, पहले यहां पर नहीं हो रही थी, लाइक इंडिया में टोबैको, कॉटन पहले यहां पर नहीं था, ये यूएसए से इंट्रोड्यूस करवाया गया। So now cotton and tobacco is not a native crop, it is a exotic जो बाहर से इंट्रोड्यूस करवाया गया, like tobacco, potato, jute, maize, apple, but originated in particular geographical region. For example, rice, barley. Rice is actually not a native of India, but Northeast Asia, originated from Northeast Asia. Same as barley, Southwest Asia, as same as wheat, sugarcane in Asia. तो ये जो है ये सारी नेटिव क्रॉप हैं। एक्सोटिक कौन सी है? जो पहले यहां पर नहीं थी बट हमने जो है बाहर से इंट्रोड्यूस किया। बता देता हूं, इन 1600 AD पुर्तगाल जो थे इंट्रोड्यूस मैनी क्रॉप्स लाइक पपाया, कॉटन, शुगर बीट, स्वीट पोटैटो एंड मैनी मोर। क्लियर? तो क्या बोला, नेटिव क्रॉप वो हैं जो एक पर्टिकुलरली जियोग्राफिकल रीजन के अंदर ही क्या है, इंट्रोड्यूस, ओरिजिन हुआ है जिनका। तो जहां पर जिसका पहले ओरिजिन नहीं था बट यहां से हमने किसी और चीज को लाकर इंट्रोड्यूस करवाया है, तो ये क्या है, एक्सोटिक और इंट्रोड्यूस। नाम से पता चल रहा है, इंट्रोडक्शन करवाई है, प्रोडक्शन करवाई है। समझ आ रहा है? Is there any doubt you can ask me right now? There is not, you can also tell me that there is no doubt। तो समझ आ रही है या नहीं बता दीजिए। एंड प्लीज बार बार नहीं बोलूंगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, योर फ्रेंड्स, टू योर ब्रदर, सिस्टर, भाभी, टू एवरी। क्लियर? Okay. Our next classification based on the season of growth. Based on the season of growth, most important one. Not important one from your point, from your exam point of view, but also important one for your agronomy.
अगर भाई एग्रोनॉमी पढ़नी है तो ये चीज तो भाई पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर? बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग। See, in India, we divide season in 3 ways: Kharif, Rabi, and Kharif, Rabi, and Zaid. But as we know, हमारा न्यू ईयर कब आता है? 1 Jan to 31 दिसंबर। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब होता है? 1 April to 31 मार्च। तो हमारा एग्रीकल्चर ईयर कब होता है? 1 जुलाई टू 30th of क्लियर? तो हमारा जब भी ये स्टार्ट होता है तब वो कौन सा सीजन होता है? खरीफ सीजन। सो द क्रॉप सोन इन मंथ ऑफ जून, जुलाई। इफ वी सो द क्रॉप, जो हम बिजाई कर रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं, अगर वो हम जून जुलाई के महीने कर रहे हैं, जून जुलाई के महीने हम क्या कर रहे हैं? सोइंग। और उसकी जो है हार्वेस्टिंग कब कर रहे हैं? सितंबर टू, फॉर एग्जाम्पल कौन सा महीना चल रहा है अभी? जुलाई। तो जुलाई में जो क्रॉप लग रही है वो खरीफ सीजन की क्रॉप है। ऐसी क्रॉप्स जिनको बहुत ज्यादा गर्मी, क्योंकि अभी गर्मी चल रही है ना, तो बहुत ज्यादा गर्मी का टेम्परेचर चाहिए और वो गर्मी को क्या है? टॉलरेट कर सकती हैं। The crops which tolerate the high temperature, not as high as 50 degree, but can tolerate the high temperature like 40 degree, 45 degree or 35 to 40 degree. So, like paddy. As we all know, transplanting of paddy has हो रही है अभी, है ना? पैडी की जो है हर जगह पर ट्रांसप्लांटिंग की जा रही है। उसके अलावा कॉटन, उसके अलावा मिलेट्स, मेज, आफ्टर मेज मिलेट और लेग्यूम्स, मोस्ट लेग्यूम्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ऑल आर एग्जांपल ऑफ खरीफ सीजन क्रॉप। तो खरीफ सीजन में क्या है, अगर आपने देखा हो तो हमारे पास क्या है इंडिया के अंदर, जो हमारा ये जो मैप है यहाँ पर क्या है? केरला। इंडिया में ऑन द 1 जून और मॉनसून मीन्स जो भी महीना चल रहा है मॉनसून, दिस वन इज ईस्ट, वन इज वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो साउथ वेस्ट, ऑन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन wind blown on the 1st June, winds enter in केरला। बट इस बार 15 दिन पहले आ गई, वो बाद की बात है। विंड जो है ये केरला में एंटर करते हैं और यहाँ से होते हुए गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर होते हुए बस ये तमिलनाडु का लेफ्ट, ओनली तमिलनाडु एंड सम पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
left some part of Jammu and Kashmir. So we classify these season according to the southwest monsoon. So the crop grown in southwest monsoon season and dependent on the monsoon, dependent on this monsoon, is known as Kharif crop. And the most important part is that in India 75% of rain received from southwest monsoon. साउथ वेस्ट इस तमिलनाडु का कुछ एरिया छोड़ देती है और जम्मू कश्मीर का ये वाला कुछ एरिया जो है ये छोड़ देती है, बाकी हर जगह पर जो है तो द क्रॉप ग्रोन्स इन साउथ वेस्ट बिकॉज अभी तो क्या है, अभी इरिगेशन जो है वो हम देने लग पड़े हैं. मोस्टली क्रॉप्स आर नाउ इरिगेटेड बाय मीन्स ऑफ ट्यूबवेल, by mean of canal, by mean of watering, by mean of wells. But in ancient time, only source for our water is monsoon or rain. So farmer grew the crops only according to the monsoon requirement and according to the monsoon. Clear? So southwest monsoon, the crop grown in the southwest monsoon or according to the southwest monsoon is known as खरीफ crop. तो इसमें गर्मी होती है, खरीफ सीजन में गर्मी होती है, तो इसको पानी रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट जो है ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए ये जो है साउथ वेस्ट मॉनसून पे डिपेंड हो जाते हैं. बिकॉज इन इंडिया 70% ऑफ टोटल रेन, इन इंडिया 75% ऑफ टोटल रेन रिसीव्ड फ्रॉम द साउथ वेस्ट monsoon. Clear? After that, Rabi season. Rabi season is a cold season. Crop grown in cold season, like sown in October, November, harvested in March, April, require less water, but more cold condition than the Kharif season crop. For example, wheat, barley, gram, mustard, onion, clear? Potato. Sugarcane is neither a Kharif crop nor a Rabi season crop. I will tell you later. Clear? How we divide sugarcane crop, how we classify the sugarcane crop. Next one is Zaid season. Zaid season is from, देखो खरीफ में हमने जून जुलाई में लगाया, हार्वेस्ट कर ली सितंबर अक्टूबर. आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ खरीफ सीजन क्रॉप वी सो रबी सीजन क्रॉप October, November and harvested in March, April. But we have time remaining, months remaining like April, May, June. 2 to 3 months available. In that available time, we sow Zaid season crop. We sow Zaid season crop that is from March to April and harvested in May to June. Only 2 to 3 months. So the crops having lifespan of less than 60 to 70 days are grown in Zaid season. Are grown in Zaid season. For example, cucumber, watermelon, moong, some varieties of moong having only 60 days of lifespan. So all these crops are grown for. You can write. If somebody asks that Zaid season is in between Kharif to Rabi or Rabi to Kharif, तो जायद सीजन हमेशा रबी से खरीफ के बीच का पीरियड है, ना कि खरीफ टू रबी. खरीफ टू रबी नहीं है, रबी टू खरीफ के बीच में जो है सीजन है वो जायद सीजन होता है. आपके सामने आप इसको भी लिख सकते हो, सेम लिखा हुआ है. Because in Kharif season mostly temperature is 30 to 38 degree, in Rabi season 20 to 30 degree, and in Zaid season temperature is normal, neither hot neither cold. Sown in month of June July, harvested in September October. Example: rice, millet, soybean, cotton, groundnut,
sorghum, which are planted in February, March, harvested in May, June, and crops grown in a month of October, November, and harvested during the April. Clear? You can write this, or you can write same thing, potato, potato. Clear? शुगर केन की बात इसमें नहीं करेंगे, शुगर केन की बात आगे आ जाएगी. विल टॉक अबाउट द शुगर केन क्रॉप इन आवर नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस. ओके. On the basis of life period, this classification we already discussed in our yesterday class, that crops are annual, either annual, which take one season, biennial, 2 season, mostly all the cereal like wheat, maize, barley, paddy, millets, legumes, sorghum are annual crops. Biennial means take 2 seasons to complete its life cycle. For example, sugar cane, sugar beet. Remember this one point, that हमने उसको कब काटा वो जरूरी नहीं है. हम किसी क्रॉप को क्या है, कच्चा खाना पसंद करते हैं. उसका एक सीजन पूरा होता है, हम उसको कच्चा खा जाते हैं, बट वो अभी 6 महीने और चल सकती थी क्रॉप फॉर सीड प्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल इन टोमेटो, टोमेटो जो है उसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा अभी. ठीक है, टोमेटो को जो है सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लेंगे, उसको निकाल लेंगे. बट टोमेटो जो है वो आगे एक सीजन और लेके जाएगा अगर उसके सीड चाहिए हो तो. If we require seeds of tomato crop for the next or upcoming season, we cannot harvest in month of September to October. It requires 3 to 4 months more to produce seeds as same as their parents. Clear? तो हमने उसको हार्वेस्ट कब किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रॉप कितने समय तक, कितने टाइम तक चल सकती थी, उसी को क्या बोलते हैं, लाइफ पीरियड. देन इट्स पेरिनियल. पेरिनियल में ऑल द मोस्टली ऑल द फ्रूट क्रॉप्स, मैंगो, बनाना, पपाया, पाइनएप्पल, एप्पल, सिट्रस, किन्नू, ऑल द फ्रूट क्रॉप्स. नेक्स्ट वन इज पैराग्रास. Paragraphs take 2 to 3 years and complete its life cycle. So these are the example of annual, biennial, and perennial. Annual, biennial, and perennial. Very good evening. Very clear? You can write this. Annual, which grow from seed. Which grow from seed. Seed से आएगा. Completes its life cycle and dies. Most important, dies during the season or same year, like cereal, which completes its life cycle in 2 seasons, is known as biennial. During first season, here the completes its vegetative growth. In first season, it's completed vegetative growth. Vegetative growth means for height, for leaves. But after that, second season completes its reproductive growth, means flowering, fruit, seeds. Here, for example, sugar cane, sugar beet, banana, onion. Here, next one is perennial. A plant which completes its life cycle in more than 2 seasons is known as perennial crop. For example, agave, elephant foot, foot yam, ये सभी को क्या है, paragrass, mostly fruit crops like coconut, apple, peach, pear, plum, mango, citrus, papaya, all are the example of now. Is it visible?
माइक में थोड़ा, लेट मी चेक फर्स्ट। आज आज एडजस्ट करो, कल से जो है माइक चेंज करो, अगर माइक में इशू लग रहा है तो। ओके क्लियर, यू कैन राइट दिस और दिस ऑल्सो सेम थिंग। नेक्स्ट वन इज on the basis of cultural practices, on the basis of cultural practices. First one is मतलब हम उस पे कैसे कल्टीवेशन कर रहे हैं। Some crop require cultivation before sowing, some crops require no cultivation before sowing, some crop require special kind of cultivation before sowing like puddling in paddy, some crop can grow in upland highly elevated area and some crops can grow in lowland, means जहां पर पानी ज्यादा खड़ा रहेगा, water stagnation is there, वहां पर होगी। So we classify based on the cultural practices. First one is according to the suitability of topo sequence, crop grown upland। अपलैंड क्या होते हैं, जब भी देखो आपके पास दो, मान लो आपके पास दो फार्म है, ये जो है आपका एक फार्म है, ये है और एक ये है अपलैंड, ये है लोलैंड। तो जमीन का लेवल ऑफ लैंड इसका नीचे होगा, है ना, लेवल जो है नीचे होगा, उसको बोलेंगे लो लैंड। सारा पानी यहाँ का जो पानी है यहाँ पर जाएगा और पानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, इसको बोलते हैं वाटर स्टैग्नेशन और वाटर लॉगिंग। अपलैंड में ऐसी क्रॉप्स जिसको पानी ज्यादा नहीं चाहिए, द क्रॉप्स विच रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर in their entire life and crop grown in upland because जो उसकी अपलैंड की जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, क्या फीचर्स है इसमें, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इज वेरी लेस, तो ये पानी को अपने अंदर खड़ा नहीं रख सकती, इसलिए यहां पर क्रॉप कैसी लगेंगी, जिसको पानी कम चाहिए। क्रॉप्स रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर आर ग्रोन इन अपलैंड, और पानी यहां पर सारा इकट्ठा होकर कहां पर आता है, लो लैंड, लाइक वेस्ट बंगाल एरिया, लाइक इन वेस्ट बंगाल। तो लो लैंड वहां पर क्या है, पानी यहां पर इकट्ठा होगा, सो क्रॉप्स रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ वाटर और रिक्वायर वाटर स्टैग्नेशन लाइक राइस, पैराग्रास, jute can grow in lowland area, in lowland area. Clear? Now crops grown upland, level elevated land, level elevated मतलब ऊपर थोड़ा सा, with drain all around and unbundled level land, means to say on upland area it's a capacity of soil to drain all the excess water below the ground. With drains or drops, crops that cannot tolerate water stagnation, जहां पर खड़ा पानी वो टॉलरेट नहीं कर सकती, comes under this group. For example, red gram, ground, four important one examples are red gram, groundnut, maize, sorghum, cotton, sesame, napier, etc. And crops which can tolerate the water stagnation are classified as crops on low land. For example, rice, dhencha, paragrass, jute. Okay, sure.
You can write this. Clear? Now, next classification. Now we are classifying based on the agronomic practices. First one is it is a lowland or upland field crop. Second one is according to the source of water. According to the source of water, first one is irrigated crop. Second one is rain-fed crop. On the basis of source of water. Firstly, I am telling you what is irrigation and what is rainfall. Irrigation means by artificial means. If we provide water to crop by artificial means known as irrigation. अगर वो नेचुरली पानी मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? रेनफॉल या फिर रेन फेड. अगर रेनफॉल से पानी मिल रहा है, if crop can grow only on rainfall, then it is rain fed crop. If crop require 1, 2 or 3 irrigation for the growth, then it is irrigated crop. So crops which require less amount of water, जिसको पानी बहुत कम चाहिए, like millets, also sorghum, are classified as rain fed crops. The crops which requires high irrigation, for example wheat, sugarcane, paddy. Paddy can also grown on rain fed condition, but mostly in India it is irrigated crop. Wheat, in wheat 85% of wheat in India, wheat का जितना भी एरिया है, area acquired by wheat crop, 85% of wheat crop is grown by mean of irrigation. And टोटल एरिया वाइज बात करें तो वीट जो है नंबर 1 पे है. हाईली इरिगेटेड क्रॉप की बात करें एरिया वाइज तो वो वीट है, क्योंकि वीट जो है इंडिया के अंदर काफी लार्ज एरिया पे लगती है. ठीक है. शुगर केन, इफ वी टॉक अबाउट परसेंटेज के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 90% ऑफ एरिया ऑफ शुगर केन इज अंडर इरिगेटेड और इज अंडर इरिगेशन. So, irrigated crops are those crops cultivation primarily depend upon the irrigation. Rain-fed cultivation mainly depend upon the rainfall. Easy. Next one is next class according to the moisture availability of soil. According to the moisture availability of soil, as we discussed earlier, lowland and upland. Lowland area are also known as wetlands because there is a water stagnation. वाटर स्टैग्नेशन होगी तो वो मिट्टी वेट रहेगी और जो क्रॉप लो लैंड पे होती थी वही क्या है? वेटलैंड पे होगी. जो क्रॉप जो है अपलैंड पे होती थी क्योंकि वहां पर मॉइस्चर जो है पानी का जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज इज सक्सेस, सो दैट्स व्हाई अपलैंड क्रॉप्स आर also classified under dry lands. Clear? Next, according to the suitable of textural group of soil, crops suitable for sandy to sandy loam. देखो, there are majorly 3 type of texture in soil. There is a major 3 type of soil texture: sand, silt and clay. अगर इन तीनों का मिक्सचर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? लोम. Clear? Sandy means रेत,
जो ज्यादा सैंड होगा वहां पर कौन सी क्रॉप, बिकॉज एक सैंड के अंदर पानी डालो उसमें पानी बिल्कुल नीचे चला जाएगा, तो क्रॉप रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर, क्रॉप रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर, फॉर एग्जांपल मिलेट्स आर क्लासिफाइड एज can grow on sandy soil. Crop which require high amount of water like paddy, jute, paragrass are grown in clay soil. In silt, crop require neither less water or high water for their entire life to grow, are classified as crop grown on silt. Clear? So crop suitable to sandy loam soil means to say light soil are sorghum, bajra, green gram, sunflower, potato, onion, carrot. And most important is sorghum. Sorghum crop is also known as camel crop. Require only 1 to 2 water, 1 to 2 irrigation or 1 to 2 watering for their entire life. Bajra, in bajra only 1 to 2 irrigation required. कैमल एज पता ना, कैमल अपने अंदर जो है पानी को स्टोर करके रख लेता है, फिर बाद में वो धीरे धीरे जो है उसको यूज करता है, वैसे इसको जो है कैमल क्रॉप बोला जाता है, सोरगम को, ज्वार। क्लियर? क्रॉप सुटेबल टू सिल्टी लोम, जूट, शुगर केन, मेज, कॉटन, जो ना तो ज्यादा कम पानी ना बहुत ज्यादा पानी को टॉलरेट करता है, हैवी सॉइल को। क्ले लोम में कौन सा आ गया? राइस, व्हीट, बार्ले, लिनसीड, लेंटिल, पैराग्रास, दुनिया ग्रास, मार्बल ग्रास। ये इन क्रॉप्स को वन बाय वन जो है हम विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, वन बाय। ओके, अकॉर्डिंग टू द टॉलरेंस प्रॉब्लम, according to the tolerance program, first one is tolerant to acidic soil. Now what is acidic soil? If we talk about the pH 7, 0, 14, it is a pH scale. 0 to 7 is acidic, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 9, 10, 11, 12, क्लियर? जैसे जैसे इधर आते जाएंगे एसिडिक कंटेंट जो है बढ़ता जाएगा। मीन्स टू से 7 is neutral, 6 is acidic, 5 is more acidic than 6 because it is more acid, 10 times more acidic than 6 pH, and 6 to 4, 4 is 100 times, because on each step it is 4 pH is 100 times more acidic than 6 pH. As same as this soil, this pH has salts. So from pH 7 to 8.5, the soil having pH 7 to 8.5 is known as saline soil, and pH 8.5 greater than 8.5 is known as alkaline soil. इसके और भी क्राइटेरिया हैं, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे हमारे सोइल साइंस की क्लास में, बट एक बार के लिए तो द क्रॉप्स व्हिच कैन ग्रो ऑन दिस एसिडिक कंडीशन लाइक टी, पैडी, बट रिमेंबर दिस वन पॉइंट, all the crops can grow on neutral pH from 6.5 to 7.5. This question asked in your previous NABARD grade A exam in ARD section. Clear? Mostly crop requires 6.5 to 7.5 pH for their growth, but some crop can tolerate acidic condition, some crop can tolerate saline condition, like tea, paddy can grow on, tea, paddy, coffee can grow on acidic condition like wet rice, potato, mustard. Some can saline soil like chili, cucumber beet, wheat, sorghum, bajra, cluster bean, barley. Some can alkaline, means to say more than 8.5 pH. Crops can tolerate more than 8.5 pH are barley, cotton, bengal gram, basim, sunflower, maize. Tolerant to water loss means पानी के अंदर भी रह सकते हैं। wet rice, ढैंचा मीन्स जो भी हमारी क्रॉप पड़ी इसके अंदर वेटलैंड के अंदर
और लो लैंड के अंदर। All crops are included in tolerant to waterlogged soil. These crops can also tolerate waterlogged condition or water stagnation. Here, crops tolerant to soil erosion. The crops which can tolerate soil erosion. For example, marble grass ground. What is erosion? मिट्टी का कटाव, मिट्टी का जो है एक जगह से डिस्प्लेसमेंट और डिटैचमेंट ऑफ soil particle from one place and transported to another place, it is known as soil erosion. एक जगह से मिट्टी का टूट के दूसरी जगह पर जाना, चाहे बाय मींस ऑफ ह्यूमंस, हम भी जब चलते हैं हमारे हाथ पैरों के साथ क्या है, मिट्टी जो है पैरों के साथ आती है, तो वो क्या है, इरोजन हो रहा है वहां पर भी। बट एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मेनली जो है वो विंड से इरोजन अकर बाय विंड और वाटर। Mostly erosion occur by mean of wind or clear. Okay, next according to tillage requirement. Arable crop, the crop which require preparatory tillage, मतलब जिसको जो है प्लोइंग और या फिर हल चलाने की जरूरत पड़ेगी बिफोर सोइंग, और preparatory tillage are this kind of tillage means to say we need to prepare the land, the tillage used to prepare the land for the sowing, means to say before sowing all the plowing practices is known as preparatory tillage. All the practices for the sowing purposes is known as preparatory tillage. So the crops which require preparatory tillage are known as arable crop, like potato. Mostly all the crops in agriculture are arable crop. Just remember the non-arable crop which do not require preparatory cultivation. For example, paragrass. जैसे मिट्टी है उसी के अंदर वैसे ही जो है हम लगा सकते हैं, कुछ भी प्रेपरेशन करने की जरूरत नहीं है। We don't need any kind of preparation or preparatory tillage before the sowing, or mainly it is transplanted by mean of, मतलब इसको ज्यादातर हम क्या है ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। क्लियर? अब सोइंग क्या है और ट्रांसप्लांटिंग क्या है और प्लांटिंग क्या है, इसका डिफरेंस जो है हम आगे वाली क्लासेस में। क्लियर? नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ रूट जोन। डेप्थ कितनी रहेगी? शैलो मींस कम, जिसकी जो है डेप्थ बहुत कम रहेगी, राइट। जो भी फाइब्रस रूट्स हैं उनकी डेप्थ जो है कम होगी, जो भी टैप रूट हैं उनकी डेप्थ जो है वो ज्यादा होगी, जो भी डायकोटिलीडन हमने जो भी पढ़ा डायकोटिलीडन उनकी डेप्थ जो है वो ज्यादा होगी, जो मोनोकोटिलीडन होगी उनकी डेप्थ जो है वो कम होगी। तो शैलो रूटेड क्रॉप में क्या है, राइस, पोटैटो, अनियन। पोटैटो इज अ ट्यूबर क्रॉप। मॉडरेटली डीप रूटेड में व्हीट, ग्राउंडनट, कैस्टर, टोबैको। डीप रूटेड में मेज, कॉटन, सोरगम। एंड वेरी डीप में शुगरकेन, सेफ्ला, लूसी। Clear? Next one is according to the tolerance of hazardous weather condition. Crop which can tolerate the frost are sugar beet and beetroot. Crops that can tolerate cold condition are potato, cabbage and mustard. Drought condition, crops that can tolerate drought condition are mainly bajra, jowar, most important, and safflower also. Clear? Next. On the basis of agronomical or economical aspect. On the basis of agronomical or economical aspect. Type, it is a food crop, it is a vegetable crop, it is a non-food crop, or it is a special purpose. The special purpose. Clear? These all aspects we will discuss in our next class.
So stay tuned. Our daily class is 5 p.m. Just like the video, subscribe this channel, and share video as possible. Yeah, hope you like the session. If there is any doubt from today's session, you can ask me in the chat box. I'm here only for 2 to 3 minutes. Just ask. किसी को भी कोई भी डाउट है किसी प्रकार का, वो पूछ सकता है. तो ट्राई करो कि डेली क्लास में लाइव आओ, ज़्यादा बेटर. Here, hope like the session. Please do like, subscribe this channel. कमेंट जरूर करना क्लास कैसी लगी, क्लास में कोई डाउट है वो भी जरूर. गलत बोल दिया हो उसका रहता है. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में. स्टे ट्यून. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. जय हिंद, जय भारत.